They are ready? Yes. Good morning to all of you. I have with me Mr. T.S. Singhdeo and Ms. Shri. As you are perhaps aware that there is a manifesto committee for the 2024 Lok Sabha manifesto. The committee was constituted by the Congress President. I'm the chairman of the committee, and my distinguished friend, Mr. Singhdeo, is the convener of the committee. The committee has 15 other members. The committee has already met twice. The committee has distributed the work among the members, and the members are at work in different states of the country. The present exercise is to receive suggestions from the members of the public. This will be a people's manifesto. So it's important to gather as many suggestions from the people as possible in the few weeks that are available to us. The principal vehicle for collecting suggestions will be public consultations. Public consultations will be held in every state. Members of the committee have taken responsibility for 1 or 2 states each, and they are in the process of fixing the dates and the venue and inviting people to those public consultations to make the suggestions. Today we are launching another vehicle to collect suggestions. The first is there will be an email ID. We invite people of India to send their suggestions by email. It will be demonstrated to you presently by Ms. Shri. We will collate all the emails that we receive on that email ID, divide them into subjects, and address the suggestions which are received and try to incorporate as many as possible in the manifesto. The second vehicle that we are launching today is a website that will also be demonstrated to you. The website gives you an option to go subject-wise and send your suggestions. When the demonstration takes place, you will understand how it works. So these are 2 more vehicles along with the public consultations in order to involve the people of India in the making of the manifesto. We sincerely hope that thousands and thousands of people, especially young people, women, farmers, workers, people from every walk of life, we sincerely appeal and invite you to use these vehicles and give the Indian National Congress the suggestions that you would like incorporated in the manifesto in order to make it a truly People's Manifesto for the 2024 Lok Sabha elections. Now I'll invite my distinguished colleague, Mr. Singhdeo, to speak a few words in Hindi. धन्यवाद सर. आप सभी को प्रणाम. नववर्ष संक्रांति और आने वाले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बधाई. जैसा
चिदम्बरम सर ने बताया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने के लिए समिति का निर्माण किया है। चिदम्बरम सर उसके चेयरपर्सन है, मुझे संयोजक की जवाबदारी दी गई है। हम दोनों के अतिरिक्त 15 और सदस्य हैं इस समिति में। समिति के सदस्यों ने अपने विकल्प से कम 2 राज्यों को चिन्हांकित किया है। इन राज्यों में वो जाकर सघन विचारों का आदान प्रदान आमजनों से करेंगे, समूहों से करेंगे, संगठनों से करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी करेंगे और सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के अध्यक्षों को भी सूचना दी गई है कि वो अपने माध्यम से ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और प्रदेश में भी सुझावों का संकलन करें और जो साथी समिति के जाएंगे उनके साथ भी आदान प्रदान करें और समिति को अपने जानकारी से वो अवगत करा सकें, ताकि ये जो घोषणा पत्र बनेगा ये केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज ना रहे। जिनके लिए घोषणा पत्र बनना है, जिनके हित के लिए घोषणा पत्र बनना है, आम नागरिक देश का, भारत का, वो भी अपनी सहभागिता निभा सके और इस बाबत ये प्रयास किया जाएगा जहां आमने सामने भी चर्चा हो सके। जहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे या लोग हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए आज के तकनीकी युग में ईमेल के माध्यम से और एक वेबसाइट के माध्यम से सुझाव खुले तौर पे आमंत्रित हैं। 90 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन देश में नागरिकों के हाथों में है। उस माध्यम से भी हमने विचार आमंत्रित किए हैं, सुझाव आमंत्रित किए हैं और जो सुप्रिया जी अभी आपको जानकारी देंगी, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देंगी कि किस तरह से हम चाहेंगे कि लोगों के सुझाव आ सकें और उनका संकलन करके घोषणा पत्र तैयार हो और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी तक जाकर उनकी सहमति और अनुमति के बाद उसका प्रकाशन हो सके। जितने सदस्य हैं उनको अपने प्रदेशों के अतिरिक्त उनकी रुचि, विशेष रुचि के विषयवार भी जवाबदारी दी गई है कि उन विषयों में जिनमें उनकी विशेषज्ञता है उनकी जानकारियों का भी संकलन करके घोषणा पत्र के लिए वो सुझाव उपलब्ध कराएं। और आपसे भी ये निवेदन है कि मीडिया के माध्यम से हमारा सहयोग करें। देश के निर्माण में आने वाले 5 सालों के लिए, आने वाले दशकों के लिए इस घोषणा पत्र के माध्यम से हम आगे बढ़ सकें और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचना, आपके माध्यम से आपके मीडिया हाउसेस के भी सुझाव, आपके व्यक्तिगत सुझाव भी आमंत्रित हैं। इस पहल में आपकी सहभागिता और आपका सहयोग विशेष आमंत्रित है। Now the demonstration of the website and how to send suggestions on the email ID and on the website. थैंक यू वेरी मच चिदम्बरम साहब एंड टी एस सिंहदेव साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने वेबसाइट है आवाज भारत की। ये एक इनिशिएटिव है और ये एक पहल है कि लोगों के सुझावों से, लोगों का जो मंतव्य है उसके आधार पर हम अपना वचन पत्र, अपना मैनिफेस्टो बनाएं, उसमें लोगों की आवाज प्रतिबिंबित हो। और इसीलिए आवाज भारत की ये वेबसाइट है, इस पर आप लॉग इन कर सकते हैं awazbharatki.in और इसी में एक सेक्शन है, अगर आप जाइएगा 2 तरह से अपना सुझाव जनता दे सकती है। एक है ईमेल आईडी जो आपको नीचे दिख रहा है awazbharatki.in, इस ईमेल आईडी के जरिए आप इस पर ईमेल भेज सकते हैं। अन्यथा अगर हम क्लिक करें यहीं पर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करिएगा तो इसमें आपका नाम, आपका फोन नंबर और आपका पिन कोड आपको डालकर और फिर वो आपको सुझाव लिखने की जगह देगा और वहीं पर सुझाव लिख के आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप ईमेल नहीं करना चाहते हैं।
हाँ, वो ओटीपी आएगा और उस ओटीपी से वेरीफाई हो जाएगा कि आप ही हैं, आप ही के फोन नंबर से वो लिंक्ड है, और फिर वहां पर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। ये सारी पहल इसलिए है कि लोगों की आवाज प्रमुखता से मुखरित हो इस वचन पत्र में, इस मैनिफेस्टो में, और जनता की आवाज को सुनने का काम हमने हमेशा किया है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी का एक प्रतिबिंब है। और मैनिफेस्टो और वचन पत्र भी चार लोग कमरे में नहीं बनाएंगे जैसा कि अन्य लोग करते हैं, बल्कि जनता के मुद्दे उसमें प्रतिबिंबित हों। आई जस्ट रिपीट दिस इन इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी हु वांट्स टू राइट इन दैट लैंग्वेज। इफ यू कैन गो बैक टू द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट, the website is awazbharatki.in. There are two ways through which you can send your suggestions. Please scroll down. One is to simply write in to us at awazbharatki.in is the email ID. At inc.in, awazbharatki@inc.in. You can either email us through the website, or you can send us a separate email as well with your suggestions, with whatever you would want us to carry in the manifesto. And we are here to listen to you, because listening to the people is what we have been doing, and that is what even our poll promises are going to be. The other way you can do it is on the website itself. You click submit your suggestion on the website. You will be asked to enter your name, your PIN code, and your mobile number, after which you get an OTP, and then a section in which you can fill in your suggestions. It's quite as simple as that. This is a way to gather as many suggestions as possible in this digital age. There will, of course, like Chidambaram Saab said, like T.S. Singhdeo Saab said here, there will be on-ground consultations, but this is a way to get as many people involved in the manifesto making exercise as possible. The website is now live. It's awazbharatki.in. प्लीज लॉग इन एंड सेंड योर सजेशंस। ये वेबसाइट अब लाइव है, आप इस पर इसी समय से जाकर अपने सुझाव भी भेज सकते हैं, और उस ईमेल आईडी पर अपना मंतव्य जरूर भेजिए। Thank you. Are there any questions? Yes. Yes. So since you are holding, you said you're holding consultations in different states. How many states are being covered? Are there any figures? And when you're holding consultations in the states, would you also be consulting your local allies about some issues that may be common or something like that? I think the idea is to hold a consultation, at least one consultation in each state. It's possible that in some states there may be more than one consultation, but the goal is to have at least one public consultation at a place in every state. Now, of course, everybody is welcome to the public consultations. If allied parties, India group parties wish to attend the consultation, they are most welcome. But there will be, whether there will be closed room consultations with the India group, that's a matter which will be taken up by the India group coordination committee. The Congress president will take it up at a leader to level consultation. I can't speak about that, but there will be public consultations in every state, at least one per state. Sir, have you set any deadline for the whole process when the manifesto will be prepared? And second thing is that there's in the recent amendment, the CRPC, there was a very. No. Let's confine this to the manifesto. We'll come to other subjects later. So I'm just asking about about your manifesto only. तो उसको लेके बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स में गुस्सा था, स्ट्राइक भी रही थी। तो क्या CRPC में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उसको एक अमेंडमेंट को तो होल्ड किया है गवर्नमेंट ने, तो क्या आप लोगों के मैनिफेस्टो में ये बात भी होगी कि उनको रिपील करने के लिए या उनको चेंज करने के, उनमें अमेंडमेंट लाने की भी आप लोग बात करेंगे या कंसिडर करेगी आपकी जो ये कमेटी है? Obviously, the manifesto has to be got ready by the time the Election Commission decides the dates. No, since I don't know those dates, I can't give you a deadline. But the effort is to
get the manifesto ready for the Congress Working Committee as soon as possible. Internally, I would like to do it by February 15, but let's see how the progress is. On the second question, yes, on the criminal law bills, you know that we have submitted detailed dissent notes. My dissent note and Mr. Digvijay Singh's dissent note, Mr. Adhir Ranjan Chowdhury's dissent note are all in the public domain. Now, how much of that will go into the manifesto, I can't say. Because ultimately, the manifesto has to be approved by the Congress Working Committee. But surely, as I speak today, there will be a reference in the manifesto to the many, many unjust laws passed by the Modi government. And one set of unjust laws is the 3 criminal bills. Any other questions? Yes. सर अक्सर आप लोग मोदी सरकार और अडानी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और आपका बड़ा मुद्दा भी रहा है, लेकिन अभी हाल ही में आपकी तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा एमओयू साइन किया है अडानी के साथ, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो लॉन्च की प्रेस वार्ता है और हम इसी पर केंद्रित रखना चाहते हैं। ये सवाल आप अन्यथा मत लीजिए मेरी इस बात को, लेकिन मैनिफेस्टो लॉन्च एक बड़ी चीज़ है और जिस तरह से हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरे देश की आवाज़ प्रतिबिंबित हो, लोगों का सुझाव लेकर लर्निंग टू लिसन to people is very important and that's what we are trying to do here. मन की बात एक आदमी की सुनकर 10 साल से ये देश उकता गया है, हाथ जोड़ के कह रहा है हमारी बातों को सुनिए, और वही काम कांग्रेस हमेशा से करती है, वही काम राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में भी कर रहे थे, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी कर रहे हैं। इसकी प्रमुखता को और इसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा और उजागर करने की जरूरत है, जो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, चूंकि कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो आप लोग कमेटी जो बनाई है, लेकिन जो सहयोगी आपके जो दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो लोग भी अपने अपने मैनिफेस्टो बनाएंगे, क्या उनसे भी कोई सलाह मशवरा किया जाएगा इस बीच में, और बाद में कोई कंबाइन संयुक्त तौर पर कोई मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा? I have answered the question when she asked me. Anyone is welcome to the public consultation. If the allied parties want to participate in the public consultation, they are welcome. But whether there will be at the highest level consultations between the Congress party and the India group parties is not a matter that we can decide. That's a matter that will be decided by the Congress president and the other parties' leaders. But I suppose they will talk to each other at some stage, and whether there will be a India manifesto, I can't say. I'm only talking about the Indian National Congress's manifesto. जो घोषणा पत्र समिति बनी है, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की घोषणा पत्र समिति है, तो स्वाभाविक है कि ये घोषणा पत्र अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपने संगठन और अपने माध्यम से करेगा। इंडिया अलायंस समूह जो गठित हुआ है और जो चल रहा है, ये किस स्तर पे गठबंधन को ले जाएगा, सीट शेयरिंग की ही बात होगी या कॉमन मैनिफेस्टो होगा, ये शीर्ष स्तर पे सभी दलों के जो इंडिया अलायंस के साथी हैं उस स्तर पे इसका निर्णय हो सकेगा। Sir, as you said that most of the public opinions are welcomed in this manifesto through website or through email. Through website, there are some specific points that you said that anyone can go on and can give their suggestions or opinions. If, ma'am, you can also elaborate on what specific points or it's open. No. It's See, open. the drop-down menus. If there is a drop-down menu, then what? Anybody write in on any suggestion? No, Yes. if there is a drop-down menu, then what are those points? If you can just elaborate on that, ma'am. So you can
in, put in your name, your PIN code and your mobile number. You will receive an OTP. Once you receive an OTP, you will have an access to writing space. I don't think we can restrict people by writing on subjects. I think people should write what they honestly feel the Indian National Congress should raise in our manifesto, and we give them that liberty to do so. We will, of course, read every suggestion and classify it subject-wise, because the manifesto eventually will have different sections, and each section will deal with one or two related subjects. So when you send a suggestion, say you may send your suggestion on 3 or 4 subjects. It's our responsibility to segregate them and put them in different boxes, and then read them, understand them, reflect on them, and then make a manifesto point. That's our responsibility, and we will do it. उदाहरण के लिए मेरे पास अभी एक ईमेल आया जिसमें 51 बिंदु उन्होंने लिखे हैं, अलग अलग विषय पे एक साथ 51 बिंदु लिखे हैं। बॉम्बे के एक साथी हैं, तो हम लोग की जवाबदारी रहेगी उनको अलग अलग बॉक्सेस में डाल। The inputs you're getting, just to get what is the sentiment, what is the mood of the nation, before Well, you finalize the... The time is so limited, unlikely, but some of it will come up in the discussions, and after the discussions, it's possible that 1 or 2 suggestions will be shared with the public. But I think that time is so limited that we can't have a back and forth on the manifesto. Is that right? Yes. Thank you very much. Good day. Thank you.